मैं हूं नवमी एंड आप मेरे साथ देख रहे हैं हेल्थ टॉक्स विद एक्सपर्ट्स। एंड मेरा आज का जो टॉपिक है वो है एसिडिटी। एंड मेरे आज की जो गेस्ट है वो है डॉक्टर ग्रीष्मा। हाय डॉक्टर ग्रीष्मा, हाउ आर यू? Hi Navni, I'm fine. How are you? आई एम गुड, थैंक यू। एंड हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे कि अभी मैंने कहा, एसिडिटी है। तो आज हम डॉक्टर ग्रीष्मा से बात करेंगे एसिडिटी के बारे में, क्योंकि एसिडिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अब बहुत ही ज्यादा कॉमन है एंड ज्यादातर लोग इसकी वजह से सफर कर रहे हैं। तो इसीलिए आज कुछ ऐसे ही सवाल मैं डॉक्टर ग्रीष्मा से पूछूंगी जो आपको जवाब देगा आपके सवालों के भी। तो डॉक्टर ग्रीष्मा, मेरा जो पहला सवाल है दैट इज बेसिकली व्हाट इज एसिडिटी। मतलब हर इंसान इसकी एक नई डेफिनेशन बताता है। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एग्जैक्टली एसिडिटी? So according to medical science, acidity is a symptom. तो सिम्टम का मतलब एसिडिटी एक पूरा डिसीज नहीं है, वो एक डिसीज का सिम्टम हो सकता है। वो जैसे एक हम बताते हैं ना कि हाई टेम्परेचर हो गया, जैसा एसिडिटी एक सिम्टम है। तो एसिडिटी में क्या होता है? सो बेसिक कार्डिनल सिम्टम जो हम कहते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मेन सिम्टम दैट एवरीबडी गोज थ्रू इज हार्टबर्न। हार्टबर्न मतलब ये जो ब्रेस्ट बोन है, दैट इज एंड ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड द बिगिनिंग ऑफ द टमी रीजन, स्टमक रीजन, वहां पे जलन होता है। दैट इज द फर्स्ट कार्डिनल सिम्टम ऑफ एसिडिटी। And of course वो sometimes there will be burning sensation in the chest. अगर ये ज्यादा हो गया तो ऐसे भी होता है कि हमारे टमी या स्टमक के अंदर भी एक जलन टाइप और हीट टाइप महसूस होता है। एंड ऑल्सो अगर ये वाला एसिडिटी ऐसे ही आगे बढ़े तो एक पित्त रूप का, दैट इज अ लिक्विड टाइप ऑफ reflex can be felt from the stomach to the throat. So that is also a symptom. So most of them complain about all these symptoms, and apart from these there are some छोटे symptoms है जो कि nausea होता है, vomiting type का sensation, excessive salivation in the mouth होता है। So ऐसा नहीं है कि vomit आ रहा है, but ऐसा वाला symptom कि आने वाला है types। And also that there will be sometimes loss of appetite, that is bhook na lagana. So all these are symptoms of acidity. So what are the main reasons of acidity? Okay, so main reasons अगर देखा जाए तो acidity is a stomach related ailment, right? So whatever is a stomach related ailment always starts from a poor digestion. So if you see, if you look at what Ayurveda tells about it, there is something called Agni. Agni is the digestive fire that everyone has. It is in the abdominal region, and Agni is responsible for proper digestion of food. Now agar Agni mein koi disturbance ho, then it results in acidity, other gastric problems like indigestion, vomiting, diarrhea, a lot more gastric diseases. Also, disturbance in Agni leads to IBS, Crohn's disease, ulcerative colitis. There are a lot more diseases also. Now, acidity can be taken as the first symptom of many other diseases involving disturbed digestive fire and a high pitta also. अगर पित्ता के बारे में if I have to give you a small commentary, pitta is one of the three doshas according to Ayurveda. There are three doshas, that is Vata, Pitta and Kapha. So pitta is the location of pitta itself is in the stomach. So अगर पित्ता का कोई डिस्टर्बेंस हो, देन ऑब्वियसली उसका जो काम है, दैट इज डाइजेशन, वो ठीक नहीं होगा। एंड पित्ता का द्रव रूप, दैट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ पित्ता, अगर बढ़ गया है तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर की तरह आ सकता है। एंड दैट इज हाउ आयुर्वेदा लुक्स एट एसिडिटी। So you asked me what are the other causes of acidity. Yeah, मतलब
Yes, one is definitely the digestion. अगर digestion अच्छा नहीं है Yeah, one is, तो इसके yes, अलावा one is, तो इसके अलावा और क्या क्या reasons हो सकते हैं? yeah. So, accompanying with digestive disturbances only, अगर हम देखा जाए तो क्यों हो रहा है ये वाला पित्त का प्रॉब्लम, और क्यों डाइजेशन खराब हुई, या क्यों अग्नि खराब है, तो ये if you look at all this, there are some lifestyle and diet practices that are coming as the major causes. तो वो क्या है, बॉडी का एक सर्काडियन रिदम है. सर्काडियन रिदम का मतलब जैसे जैसे पिंड वैसे ब्रह्मांड हम कहते हैं संस्कृत में. दैट इज द वे योर ह्यूमन बॉडी इज, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ द नेचर. So जैसे morning the sun rises and sun goes to the peak in the afternoon time and sun sets in the night, the same thing happens in your body, that is in the form of digestion. So morning when you wake up, the agni is little bit, and then slowly growing until it is noon time, and noon is the time when the agni is high. एंड रात को जैसे सनसेट हो रहा है वैसे हमारे अंदर जो अग्नि है वो भी थोड़ा थोड़ा डिमिनिश होते जाता है, एंड रात को इट सेट्स. So one has to be very keen on how the agni is, so how your body's agni is, that we call as kaya agni. So उसके हिसाब से खाना पीना लाइफस्टाइल सब कुछ होना चाहिए. So just to give you an example how to eat or how to have your lifestyle according to the circadian rhythm, it's like morning your breakfast should be wholesome. So never skip your meal, but it should be wholesome, but not in a very large quantity. So this is what Ayurveda says, breakfast should be in a nominal quantity so that it can satiate your hunger, give energy for rest of the day. But always the heaviest meal should be during the lunch, during the noon when the sun is at its peak and your digestive juices are flowing. And raat ko jaise when the your digestive system, it's also going to set as the sun sets. So taking a light meal in the night always helps. So following circadian rhythm will always prevent acidity. So why acidity? Because people do not follow the circadian rhythm, may land up in acidity. So, and what are the other causes? Other causes are excessive intake of sharp hot penetrating. So what is sharp hot penetrating? Salt, excessive usage of salt is something that can be avoided. Excessive usage of tangy substances like tomato ho gaya, ya lemon or any other citrus. So ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना, तो उसका एक regulatory modulatory use होना चाहिए. That is something that is very useful. And excessive intake of substances that might increase the heat element in the body, जैसे कि chili हो गया, like mirchi, or like any alkaline substances. So all the like alcohol is something that increases the body heat, increases the pitta in the body. So agar all these things in food, and if you should see the lifestyle or habits of a person, smoking is something that increases the body heat. So smoking, even if you follow all the very good lifestyle regime and very good diet, and you wake up at 4:30, follow all the regimens mentioned in Ayurveda, even after doing that, if you're smoking or inhaling a lot of heat substances, it could be any other herb also, but that will definitely give rise to some increase of heat in the body, that can give rise to acidity also. So all these are other few causes of acidity. Also continuous intake of some medications, like certain medications that are given as painkillers can cause acidity. जैसे हम बोलते हैं कि अगर मतलब सिर दर्द के लिए एक पेन किलर खा लिया तो फिर पेट दर्द हो जाता है. So that is a side effect of that medication that is causing acidity. So long term use of certain medications can also cause acidity. And also I mean अगर very practically बोलना है तो रात को heavy meals खाना, that also can cause acidity because of hampered digestion.
एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ जो मसाले वगैरह डाल के नॉन वेज खाना, वो भी स्पेशली चिकन फिश वगैरह, दैट ऑल्सो कैन कॉज एसिडिटी. So these are some of the causes. जैसे कि आई नो कि आपने पहले भी कुछ सिम्टम्स हमें बताए थे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एसिडिटी के, बट उसके अलावा भी इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली कि क्या क्या सिम्टम हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हमें एसिडिटी हुई है, सो व्हाट आर दीज? हार्टबर्न होता है. ओके, so that is the first presenting symptom. यस. नौशिया हो सकता है, जैसे वॉमिटिंग होने वाला टाइप फीलिंग, और वॉमिटिंग हो सकता है, और एक्सेसिव सलाइवेशन हो सकता है, और वैसे शरीर के अंदर एक जलन और एक हीट टाइप फीलिंग होता है आपको होती है. एंड ऑल्सो लॉस ऑफ एपिटाइट, दैट इज खाना खाने में इच्छा नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम. एंड खट्टापन आ रहा है, खट्टा ढकार आ रहा है, दैट इज अ सिम्टम of acidity. Also, so people when they wake up in the morning and brush their teeth, they vomit some greenish or brownish fluid. So that is actually the excess pitta that is going out of the body. So that is also one main symptom, vomiting first thing in the morning. So all these are the symptoms of acidity. Also, as acidity progresses, when we don't give proper care to our body at a proper time, it might lead to ulcers, other esophageal disorders and gastritis, all those problems. So agar us stage mein pahunch gaya to fir obviously there will be abdominal pain in the stomach associated with, there might be some bleeding stools. अगर abdomen के अंदर कुछ bleeding है तो stools के साथ motion के साथ there will be bleeding. So most of the time when there is bleeding from the abdomen, the stools will not you cannot see fresh blood. It will be actually greenish brown in color. So that is a symptom. अगर motion greenish या brownish color में हो, मतलब डार्क कलर में हो, दैट इज अ सिम्टम दैट कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. दैट इज हाउ वी इन्वेस्टिगेट. सो अब इसके ऐसे क्या नुस्खे हैं, या मैं कहूँ व्हाट आर द होम रेमेडीज, इजी टू डू होम रेमेडीज, जो हम घर पे ही विदाउट एनी मेडिकेशन, अगर हम नहीं जाना चाहते हैं किसी प्रॉपर मेडिकेशन के लिए, तो ऐसे घर के क्या ऐसी होम रेमेडीज है जो हम कर सकते हैं? एंड इफ यस, इफ देयर आर सम मेडिकेशंस जो हम ले सकते हैं जो आप अभी हमें बता सकते हैं, सो डेफिनेटली. Okay, so of course acidity is a pitta type of problem. Yeah. So पित्त कम करने के लिए जितने भी क्रिया है वो हम यूज कर सकते हैं to manage acidity also. So I want to break certain things that people already have in mind. So agar if you are a person who already have acidity, they might be taking cold milk or taking cold yogurt so that उस टाइम के लिए रिलीफ हो, और taking milk mixed with banana. So all these things might give you a temporary relief, but it actually worsens your acidity. So ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं करना. अगर रात को 12 बजे ऐसा हो रहा है कि बहुत acid type आ रहा है, you can take maybe 1 teaspoon of yogurt, that is fine, but do not make it a habit. Eventually जितने भी home remedies मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊं, this is not the treatment. Treatment is you set your circadian rhythm according to what we discussed earlier. एक meal time रखो, रात को हल्का खाना है. So all these are the real remedies, but we always like taking the short route and अभी कुछ कर लिया and अभी के लिए हो गया, ठीक है, but वो हो जाता है, but in a long run it will never give you fruit. So talking about certain home remedies with herbs that would help are एक मुलेठी करके एक herb है, you might have heard about it. So it is a root actually. So mulethi root can be chewed. So वैसे ही take a small root and keep chewing it. It will give you some sweet juices and that will actually reduce acidity. Bouts of acidity reduce हो जाता है. Aloe vera is a very common plant, सबके घर पे होता है and it is very accessible also. So aloe vera का pulp
को ले लो, clean कर लो, and you can just eat it like that or mix with honey, you know, make a gel and then take it. That is also fine. Amla is something that is cold in potency. So anything it is cold in potency, it acts against aggravated pitta also. So amla can be taken in any type except pickle. So pickle always aggravate acidity because it contains a lot of salt, oil and mirchi in it. So pickle is not a solution, but amla can be taken as a fresh juice or ऐसे एक fresh आंवला खा लिया, और आंवले का जो हनी में डिप करके मुरब्बा है वो ले सकते हैं. all these. And also बहुत easy and very effective है actually white butter के साथ powdered sugar लेना, वो भी a very small pinch of it. So just taking that also reduces acidity. एंड बहुत सारे रेमेडीज है एसिडिटीज के लिए, जैसे कि गिलोय का स्टेम या पत्ते का 5 से 10 ml का जूस in the early morning empty stomach, that also reduces acidity. So whatever remedies I have been telling now, it is actually a holistic approach to acidity. ऐसा नहीं कि अभी कर लिया and अभी के लिए है. अगर गिलोय का जूस आप डेली खाओगे, जैसे 21 डेज लेंगे, तो ऑब्वियसली आपके एसिडिटी में एटलीस्ट 50 to 60% फर्क पड़ने ही वाला. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स. एंड yes. talking about so I said something about pickle, so I just want to elaborate some. So pickle जैसे हमारे घर पे हम जो यूज करते हैं ये ड्राई रेड चिली. Dry red chili is the number 1 causative factor of acidity. So agar if you are a person who is popping a lot of pandy or ranitidine or complaining of acidity every day, पहले तो जाकर वो किचन में जो डब्बा होता है ना, उसको बाहर फेंक दीजिए, उससे ही आधा से ज्यादा एसिडिटी सही हो जाता है. So pepper is something that you can use to reduce acidity or as a spice in the food. Cloves can be used, elaichi can be used, cinnamon can be used, that is dalchini. तो ये लौंग, elaichi, dalchini, ये सारे herbs और सौंठ, that is the dry ginger, और pepper, that is काली मिर्च. आप ये सब spices use करते हैं, use कर सकते हैं instead of the red mirchi. Actually if you see the Ayurvedic text, जो actually there are lot of Ayurvedic texts जो 5000 years पहले जो text आया है, 2500 years पहले जो आया है, and latest जो आया है. So अगर हम देखें जो बृहत्रयी, that is the first few Ayurvedic texts, उसमें acidity करके एक disease ही नहीं है. तो अगर उस टाइम का पीपल का लिविंग कंडीशन और ईटिंग स्टाइल अगर हम देखें, तो उसमें ये रेड चिली कभी यूज नहीं करते हैं एज ए स्पाइस. सो रेड चिली केम इनटू इंडिया फ्रॉम द पोर्चुगीज soldiers and men who tried to invade India. So they brought this plant, and that is how in the later textbooks of Ayurveda, if you see, there is a mention of acidity in almost all type of digestive diseases. So that is one way. I mean, in traditional Indian practices, अगर हम घर का properly खाना बना रहे हैं with Indian spices, then acidity कभी नहीं होगा. Indo-Chinese dishes जो है, जो Szechuan type का dishes हम बनाते हैं, obviously it contains a lot of Ajinomoto, MSG, and this dry red chili and all that stuff obviously causes acidity. So these are certain things that you can keep in mind. And some preventive aspect, if I would like to say 2-3 preventive aspects. So one thing is taking caffeine in the morning. So it could be with milk or without milk, but empty stomach में गर्म पानी या normal पानी लेना अच्छा है, rather than taking your bullet coffee or like a black coffee or something, because it always has an acidic pH and it causes acidity. Also आजकल weight loss के लिए एक apple cider vinegar है. People are taking it mixed with water. So apple cider vinegar also has a low pH. So it is बहुत खट्टा taste है, and it also increases the pitta in the body. So apple cider लेना
अच्छा है, बट आप ऐसे ले लीजिए कि बहुत डाइल्यूट करके ले लिया, जैसे कि हाफ टी स्पून विथ half glass of water or in some ratio like that, or take it once in 2 days or once in 3 days, something like that. So that would really prevent the bouts of acidity. Yeah. You talked about aloe vera juice and giloy ka juice. So I just wanted to ask कि आपने स्पेसिफिकली एलोवेरा पल्प के बारे में यहाँ पे बात की थी, तो जैसे मार्केट में व्हेन वी गो आउट एंड यू मस्ट हैव सीन, वी हैव सीन कि इतने सारे एलोवेरा के जूसेस अवेलेबल हैं, गिलोय के जूसेस अवेलेबल हैं, आंवला का जूस अवेलेबल है. सो आप इन ओवर द काउंटर इन बॉटल्स को, इन जूसेस को कितना रिकमेंड करते हो? मतलब बिल्कुल नहीं लेना है, ले सकते? हाँ, मैं पर्सनली किसी बॉटल्ड जूसेस को रेकमेंड नहीं करती. दैट इज ओनली बिकॉज उसमें प्रिजर्वेटिव्स है, ओनली दैट, और कोई इंटेंशन नहीं है. So the thing is, when there is preservative, obviously there will be some acidic component in it. So अगर एक आंवला है, घर पे ही हम प्रिजर्व कर सकते हैं, हनी में प्रिजर्व कर लिया, या ब्राइन दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन में प्रिजर्व कर लिया, या वी प्रिजर्व थिंग्स इन ऑयल. सो दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन. बट adding a chemical reagent like sodium benzoate, all these things can trigger acidity. So that is why I do not stand with that. एंड व्हाट अबाउट एलोवेरा पल्प? अगर मेरे पास एलोवेरा का प्लांट है, मैं उसे कट करके वो पल्प निकाल रही हूँ, सो आई कैन डायरेक्टली हैव इट विद अ स्पून और नॉट? वी हैव टू क्लीन इट. Directly have it. Yes, you can directly have it. Some people like mixing it with some little bit of honey and having it. That is also a very good practice. Little bit of sugar, that is also okay. So all these things are fine. Yeah. Now, are there any medicines जो आप recommend करें कि हाँ, जिन्हें एसिडिटी रहती है तो वो ये medicines ले सकते हैं? So जो मैं कह रही थी herbs के बारे में, so मुलेठी का पाउडर ले सकते हैं. मुलेठी का पाउडर mixed with honey, that is a very good. So ऐसे एक बाउल में मिक्स करके रख सकते हैं in the morning, and दिन में 3-4 बार उसको थोड़ा थोड़ा करके लिक कर लिया. That is a very good thing to do. And also जिनको acidity हो, mostly they will also suffer from constipation. So at that time, relieving constipation will also cure acidity. So, the isabgol is available in the market. Isabgol is something that can be mixed with warm water or, little bit milk, diluted milk taken in the night, and then subah jab fresh ho jata hai, when your stomach is clear, then automatically acidity, there is also a relief in acidity. So this can be done. There is a herbal formulation in Ayurveda called as the Avipatikar Churnam. So Avipatikar Churnam can be taken in the night. So maybe half teaspoon to 1 teaspoon is very good adult dosage. So that can be mixed with mild warm water, can be taken in the night. So subah thoda sa, there will be some loose stools. It's not like diarrhea, but हल्का सा लूज टूल्स, जैसे कि वो aggravated पित्त जो है और टॉक्सिन्स है, it's just going out, and obviously there will be a change in the acidity or the digestion pattern. Also there are a lot of medicines like if you go to a doctor might give you Kamadhuga ras, or Amla Pitantaka Churan is there. So some preparations of guduchi, some preparations of sariba tyasavam karke medicine hai. So syrups dete hain. So all these things can be taken, but I can only tell you 2-3 ताकि कुछ adverse reaction भी ना हो. So you talked about isabgol जो मार्केट में अवेलेबल है. So I just want to ask कि जो isabgol है, क्या मतलब मैंने काफी बार सुना है कि उसे डेली नहीं खाना चाहिए, इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए. तो मतलब is it safe to take isabgol every day, every night, या आपको तभी लेना चाहिए जब constipation हो, या अगर सिर्फ acidity है, constipation नहीं है, तो क्या isabgol ले सकते हैं? So, किसी चीज का आदत ऐसे नहीं डालना चाहिए, जो त्रिफला चूर्ण का भी आदत नहीं डालना चाहिए, ठीक है. बट इफ यू आर someone suffering from chronic constipation and acidity,
सो कुछ तो करना चाहिए ना ताकि यू गेट अ रिलीफ. सो औषधि के रूप में, दैट इज दवाई के रूप में, यू कैन टेक इसबगोल इन द नाइट. अगर आप इसबगोल का एक आदत डालोगे, जैसे कि मैं 15 साल से इसबगोल खा रही हूँ एंड अभी बिना इसबगोल का मेरे लाइफ नहीं चलता. सो दैट इज समथिंग दैट आई वुडंट एडवोकेट. But if you're someone who is suffering from chronic constipation, acidity, and all that heat related symptoms, so that person can take isabgol in the night. So in that cases, wahan pe it is not a habit forming medicine. And there is nothing like a habit forming medicine actually. लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर आज मैंने कुछ ले लिया तो फिर कल भी मुझे लेना होगा, परसों भी लेना होगा. वो तो मेरे ऊपर है कि if I want to take it or not. अगर मैं if I am taking all other precautions of doing a proper diet, yoga can be done. Vajrasana is something that helps digestion. अगर मैं सुबह उठ के योगा करती हूँ, वज्रासन करती हूँ और पवन मुक्तासन करती हूँ, doing all these changes itself will reduce acidity, ताकि मुझे कुछ दवाई के ऊपर और कुछ एलोवेरा के ऊपर या मुलेठी के ऊपर I wouldn't have to rely upon it all the time. Yeah. Also talking about certain things that people can do to take precautions. So किसी को ऐसे होता है कि some people are obese, so obesity also could lead to acidity. So when people are obese, there will be pressure over the abdomen, and that also can cause this acid regurgitation. So losing weight itself helps in that case. They do not have to take all this aloe vera and this and that and that. Losing weight simply helps. Yeah. So now I just have a last question. A basic do's and don'ts कि अगर किसी को एसिडिटी रहती है या उन्हें पता है कि कुछ भी वो स्पाइसी खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जिन्हें वो हमेशा अपने दिमाग में रख सकते हैं? Some easy do's and don'ts. Yeah. So I'll tell about the don'ts first. Yeah. So smoking कभी नहीं करना. हाँ. Alcohol avoid करना है. And also sleep timing में ध्यान रखना है, because a good night's sleep will also correct digestion. जब liver का function correct है, then there is no problem of acidity. So if your liver function should be proper, you should be asleep by 11 p.m. and between 11 p.m. and 2 p.m. is 11 p.m. in the night and 2 a.m. in the early morning is the time when the liver is taking rest. So give rest to your liver at that time. That will reduce acidity to a larger extent. And reduce consumption of processed and packed foods. जैसे गिलोय का जूस packed है, वैसे ही some soup packets हो सकता है, or pickled tuna, pickled vegetables, whatever. Or reducing all these things will always reduce acidity. And also following the same way like pickle sauces also. Sauces are something that हर एक चीज में sauce डाल दिया and उसका taste बढ़ जाता है, वैसे acidity भी बढ़ जाता है उसके वजह से. And taking home cooked food. So क्या करना है do's? Talking about that, taking home cooked food on time, that helps. So what is the time? Between 8 to 9 in the morning, have a meal. After that, if you want, you can have a little brunch also, but have something between 8 to 9, 9:30. Second thing is lunch being the heaviest, have it between 12 to 2 p.m. somewhere around it. And अच्छा है if you can take an early meal in the night. So if you take an early meal, obviously you have to sleep early. So at least 2 to 3 hours of gap between the dinner and sleep, that is advocated, so that proper digestion भी हो. And रात को ये नहीं होना चाहिए कि I got up in the night and then I got acidity and I'm searching for my pantoprazole or what. So all these can be avoided by doing all these things. And talking about yoga also helps. Like I already spoke about Vajrasan. Vajrasan can be done in the morning, even after every meal.
That is the only yogasan that can be done after a meal also. So it really helps in digestion. And take lot of vegetables and fruits rather than other fried non-veg food or any other fried substance like this papad and all these things. So fresh fruit, fresh vegetables always. And even snacking, rather than snacking on namkeen, murmure and all those things, maybe you can take an apple, because apple, all these seasonal vegetables and seasonal fruits jitne bhi hai, that will really help to keep your weight in check. It will keep your metabolism in check. It will prevent a lot of diseases, gives you a lot of immunity, prevents acidity, lot more things. So rather than going on a lot of processed packed food, taking fruit really helps. And instead of coffee or this milk tea, you can go to some alternatives like in South India there is a variety of coffee that we take, that is dry sont and jaggery, that can be taken as a coffee. So it is very common and people take it. So that also it can be used as an alternative to tea or coffee, but also take care of your digestion and acidity. So all these chote changes agar hum if we are able to do, then I don't think managing acidity will be a big problem, unless there is another big problem lying behind it, like someone having some stricture in the esophagus, stricture somewhere else in the stomach, and that is causing acidity. Then that is something that really needs intervention and medical intervention dekhna chahiye and all that. But for a normal people, I think not following the diet properly, not following a lifestyle properly, and having erratic lifestyle habits and complaining of acidity is something absurd. So that is what I would say. So I guess these are those remedies, these are those tips जिनका ध्यान रख के we can definitely get rid of acidity, क्योंकि I have seen it, even I am the one जो acidity से सफर करती रहती हूँ मैं. So I can definitely मतलब I can understand कि आपने जो भी अभी कहा वो उसको ध्यान में रखना, उसको फॉलो करना, इन टिप्स को स्ट्रिक्टली कितना ज्यादा जरूरी है. सो ये आज हमने बात की एसिडिटी के बारे में विद डॉक्टर ग्रीष्मा. थैंक यू सो मच डॉक्टर ग्रीष्मा फॉर योर टाइम. एंड हमने इस प्रॉब्लम के बारे में बात की, हमने इस प्रॉब्लम के बारे में जाना. अगली संडे को मैं एक और अच्छा सा हेल्थ टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगी विद द हेल्थ एक्सपर्ट. तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल ऑफ निरोगम. बाय एंड टेक केयर. Bye Navni. Bye everyone.